क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना हो सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है।
ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire,
Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Carl Friedman, Element, edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रन टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Carl Friedman, Element, edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रन टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Carl Friedman, Element, edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रन टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's
Poetic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starring Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starring Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द
2004 Danish film It Follows Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative
Media English film distributed by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009। रनिंग टाइम 105 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। पास तो बजट 26 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media English film distributed by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009। रनिंग टाइम 105 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। पास तो बजट 26 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media English film distributed by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009। रनिंग टाइम 105 मिनट। कंट्री यूनाइटेड स्टेट। लैंग्वेज इंग्लिश। पास तो बजट 26 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by
James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while
reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश,
पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश। पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश। पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen,
produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Corey Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009 और टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starring Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Corey Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009 और टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starring Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Corey Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Loga Productive Relative Media Single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009 और टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman
as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम
Sheridan and written by David Wenderfropp, a remake of the 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by
Edit by J. Cassidy by music by Thomas Newman. Production company Michael D. Logo productive relative media single film distribute by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009 रनिंग टाइम 105 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. पास तो बजट 26 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन. बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप. ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by J. Cassidy by music by Thomas Newman. Production company Michael D. Logo productive relative media single film distribute by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009 रनिंग टाइम 105 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. पास तो बजट 26 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन. बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप. ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by J. Cassidy by music by Thomas Newman. Production company Michael D. Logo productive relative media single film distribute by Lionsgate. Release date 4 दिसंबर 2009 रनिंग टाइम 105 मिनट. कंट्री यूनाइटेड स्टेट. लैंग्वेज इंग्लिश. पास तो बजट 26 मिलियन. बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन. बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं. ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप. ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise
for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war
in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश,
पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Singoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स ये 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen,
produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by J. Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by J. Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by J. Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman
as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन इज़ अ 2008 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय डेविड कोपे, who also co-wrote the screenplay with John Kemps. It stars English comedian Ricky Gervais in his first leading feature film role as a dentist who can see and talk with ghosts, along with T. Leone as a young widow and Garg Kinner as his recently deceased husband. Giving Polone produced the film for Spyglass Entertainment and Prahi, and it was distributed by Paramount Pictures under the DreamWorks पिक्चर लेबल। सो गाइज, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लेते हैं। रिलीज डेट सितंबर 19, 2008, रनिंग टाइम 102 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट 20 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 27.1 मिलियन, प्रोडक्शन कंपनीज ड्रीमवर्क पिक्चर्स, स्पाईग्लास एंटरटेनमेंट, प्राहा। सिनेमाटोग्राफी स्टारिंग, रिटन बाई, डायरेक्टेड बाई। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने के बाद इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेनफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starring Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Santa Cafe Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, single film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय
डेविड वेंडरफ्रॉप, a remake of the 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रन टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रन टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 Danish film It Follows. Captain Sam Chell, portrayed by Toby Maguire, a presumed dead prisoner of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Maguire, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D.
local productive relative media single film distribute while Lionsgate released Charles संपत 2009 रन टाइम 105 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश पास तो बजट 26 मिलियन बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Local productive relative media single film distribute while Lionsgate released Charles संपत 2009 रन टाइम 105 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश पास तो बजट 26 मिलियन बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Sheridan, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Cavans, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman. Element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Local productive relative media single film distribute while Lionsgate released Charles संपत 2009 रन टाइम 105 मिनट कंट्री यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश पास तो बजट 26 मिलियन बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गाइस आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड वेंडरफ्रॉप ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination
और बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा। डायरेक्टर बाई जेम्स एडन, स्क्रीन प्ले डेविड बेनियोफ, बेस्ड ऑन ड्रे बाई सुसेन वेयर एंड एंड्रस थॉमस जेनसन, प्रोड्यूस बाई माइकल डी, लूसिया सिंग्योरिस, रियान कवंस, स्टार्टिंग तोबे मैग्योर, जैक जेनिहाल, नेटियल पोर्टमैन, सैम सिपार्ड, सेनेटर कावी फ्रीडमैन, एलिमेंट, एडिट बाय जय कैसिडी बाय म्यूजिक बाय थॉमस नेवान, प्रोडक्शन कंपनी माइकल डी, लोगा प्रोडक्टिव रिलेटिव मीडिया सिंगल फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय लायंस गेट, रिलीज डेट 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेल्डन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, रियान कवंस, स्टार्टिंग तोबे मैग्योर, जैक जेनिहाल, नेटियल पोर्टमैन, सैम सिपार्ड, सेनेटर कावी फ्रीडमैन, एलिमेंट, एडिट बाय जय कैसिडी बाय म्यूजिक बाय थॉमस नेवान, प्रोडक्शन कंपनी माइकल डी, लोगा प्रोडक्टिव रिलेटिव मीडिया सिंगल फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय लायंस गेट, रिलीज डेट 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेल्डन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 43 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Dre by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, रियान कवंस, स्टार्टिंग तोबे मैग्योर, जैक जेनिहाल, नेटियल पोर्टमैन, सैम सिपार्ड, सेनेटर कावी फ्रीडमैन, एलिमेंट, एडिट बाय जय कैसिडी बाय म्यूजिक बाय थॉमस नेवान, प्रोडक्शन कंपनी माइकल डी, लोगा प्रोडक्टिव रिलेटिव मीडिया सिंगल फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय लायंस गेट, रिलीज डेट 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। ऐसा आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेल्डन एंड रिटन बाय डेविड बेंडोफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while
reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। गाइस, आज हम ब्रदर्स 2009 फिल्म मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। ब्रदर्स 2009 अमेरिकन फिजियोलॉजी ड्रामा वार फिल्म, डायरेक्ट बाय जिम शेरिडन एंड रिटन बाय डेविड बेनफ्रॉप, ए रीमेक ऑफ द 2004 डेनिश फिल्म इट फॉलोज कैप्टन सैम चेल, पोर्ट्रेड बाय टोबी मैग्योर, ए presumed dead personnel of the war in Afghanistan who deals with extreme PTSD while reintegrating into society following his release from captivity. The film also stars Jack Gyllenhaal as his brother and Natalie Portman as his wife. Both films take inspiration from Homer's epic poem The Odyssey. The film received a mixed response and grossed 33 million. Magyar, however, received particular praise for his performance, receiving a Golden Globe nomination for Best Actor in Motion Picture Drama. Directed by James Eden, screenplay David Benioff, based on Broadway by Susan Weyer and Andreas Thomas Jensen, produced by Michael D. Lucia Signoris, Ryan Covens, starting Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Senator Kyle Friedman, element edited by Jay Cassidy, by music by Thomas Newman, production company Michael D. Luca, productive relative media, English film distributed by Lionsgate, release date 4 दिसंबर 2009, रनिंग टाइम 105 मिनट, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, पास तो बजट 26 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 43.5 मिलियन। बस गए, इस फिल्म का रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।